ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था. वील कंटिन्यू फ्रॉम दैट. वी हैड डन करंट एज इट इज. करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया था हमने. आज हमने करना है डीसी सर्किट्स, which is resistors in series and resistors in parallel. So first of all, we'll see how we arrange resistors in series and how to solve the question. For example, if we have two resistors in series like this, how to identify that? There is only one path of the current. That means the current will be same in the whole circuit. वही करंट R1 में होगा, वही करंट R2 में होगा. The current is same in both resistors. This identifies them as in series. So they will have different voltages V1 and V2. V1 can be calculated as IR1. V2 can be calculated as IR2. This will be the potential difference across R1. This will be potential difference across R2. And the total voltage will be the EMF of the cell. So from here, EMF will be equal to V1 plus V2. If EMF of the cell is V, that means it will be IR1 plus IR2. If I take I common, I get R1 plus R2 as your product, sum is equal to V times I, R1 plus R2, and from here, V over I is R, the total resistance of the circuit. In other words, just add the two resistors and you will get the total resistance of the circuit. Derivation of this formula is in syllabus, and you should know how to find the total resistance of the circuit by simply adding the two resistors. So this is resistors in series. If we have three resistors, 1, 2, and 6, they all have same current. For example, the first resistor has a voltage of 1 volt, the second has a resistor of 2 volt, the third has a resistance of resistance 6 ohms, has 6 volt. If we add them up, it will be the EMF of the cell. So resistors in series are simply added and their voltages also sum up to be the EMF of the cell. Then we have a simple question. I'll just solve the question here. We have 4 resistors, 10, 20, 30 and 40, and the EMF of the cell is 10 volts. What will be the total resistance? Simply add them. What will be the current? EMF divided by the total resistance. What is the voltage across R1? IR1. Voltage across R2? IR2. Same current, just multiply by the resistance and you will get the voltage across that resistor. V3, IR3. V4, IR4. So this is the format you use to solve the questions. And if we add all the voltages, you will find out that the total voltage of the EMF will be equal to the sum of these voltages. Okay, let's see the application. The concept of a potential divider circuit. If you observe, it is just a name that I have given it, but actually it is two resistors in series. No difference. It's the same, two resistors in series, but it is called a potential divider circuit because it will divide the voltage in the same ratio as the ratio of the resistors. Potential divider divides the ratio in the same ratio as the resistor. Let's see how we solve them, how to find the voltage across R2, how to find the voltage across R1. First of all, we have to find the value of current. For current, we need total resistance, R1 plus R2. So the current is equal to V times R1 plus R2.
What is the voltage across R1? IR1. What is the voltage across R2? IR2. So same solution. Find the total resistance, find the current, multiply by resistance, you get voltage. Now if I divide V1 by V2, what do I get? I get R1 over R2. In other words, the voltage is divided in the same ratio as the resistor, because if you divide V1 by V2, I cancels out and we get R1 over R2. This is the reason why we call it a potential divider circuit, but actually it is the two resistors in series. इसको सॉल्व हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे टू रेजिस्टर्स इन सीरीज को करते हैं. But I'll just slightly modify the formula to make it easier and more quick to solve. In this case, first you have to find the value of current and then multiply to get the answer. This is the answer. This can be written as slightly modification. It is VR1. अगर मैं VR1 को R1 into V लिख दूं, it will make no difference. Now in this case, if you observe this formula, this is more easy to use. R1 is the resistance across which we want the voltage, divide by total resistance into the EMF. You get the answer directly. You don't need to find the current at all. If you want to, you can use the first method. If you don't want to, you can this. If you remember this formula, you can use this formula directly to get the answer. Similarly, V2. So it's your choice. Find the value of current, multiply by R1, you get V1. Otherwise, resistance of R1 divided by total resistance, multiply by EMF will also give you the value of V1, because it is VR1. It can also be written as R1 into V. So simply use whichever method you feel comfortable with. There is no restriction, but both methods are correct. Okay, let's see an application. I have two resistors, 5 ohm and 10 ohm. EMF is 12. I want to find out V1 and V2. The first step is to find the value of current. I use the first method first. I get the current as 0.8 amperes. And V1 is IR1. 0.8 into 5 is 4 volts. V2 IR2. 0.5, 0.8 into 10 is 8 volts. Same ratio, 1:2. This is the first method. What if I slightly modify? R1 into V over R1 plus R2. Again, you can see that you get the same answer by this method as well. So it is your choice. Either you use the first method, or if you want to, you can use the second method. The second method is slightly fast because you just straight away find the ratio of the resistor with the total resistance and multiply by the EMF. You get the answer more quickly. So it's your choice. You can use the first method if you're comfortable with that, or you can use the second method. Both methods are correct and both methods will give you full credit. रेशियो 1:2 आ रहा है, इसलिए इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कहते हैं. अदरवाइज इट इज टू रेजिस्टर्स इन सीरीज. Next is the application of resistors in series is the internal resistance. इससे पहले हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं की थी. Here we are talking about internal resistance. Basically, it is a resistance inside the cell. And it is taken in series with external resistance. What is internal resistance? It is the resistance of the cell where some of the voltage is lost inside the cell or energy is wasted inside the cell. That is called internal resistance of the cell. Basically, a cell has some resistance. It's very small. Generally, we neglect it, but if we don't neglect it, then we have to consider it as in series with external resistance.
So internal resistance is the resistance of the cell where some of the volts or energy is lost inside the cell. So this is the definition of internal resistance. And it is taken in series with external resistance. So if I ask you what is the total resistance of the circuit, it will be R plus small r. दोनों रेजिस्टेंस को इन सीरीज ऐड करेंगे. So how we find the EMF? We know that I will be equal to E over R plus R. अगर हमें करंट निकालना है तो EMF को हम टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे. And from there we get the formula for EMF is equal to IR plus I into small r. अब यहां पे they may ask you what is the value of terminal potential difference. अब यहां से वो कहता है जी व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज द वोल्टेज आउटसाइड द सेल. इस सेल के बाहर जो वोल्टेज आ रही है वो हमें निकालनी है. दैट इज आई इंटू कैपिटल आर. तो फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, multiply with external resistance, you get terminal potential difference. But there is a second method. E minus I into small r is also terminal potential difference because अगर आप EMF में से loss volts minus कर देंगे तो you will get the value of terminal potential difference. So there are two methods to find terminal potential difference, either I into capital R or E minus IR. Both methods can be explained as equal to terminal potential difference or voltage outside the cell. Secondly, if they ask you to find the loss volts, either use I into small r. आपने इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करना है. आई आर कैसे निकलेगा? I into R. अगर आपको रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है, I into R कर लें. That will be your loss volts or EMF minus terminal potential difference. E minus I into capital R will also give you the value of loss volts. I बल्कि इसको मैं V की जगह I will replace it by I into R. Just one second. Okay. Here. I R. यहां से भी हम R निकालने के लिए E में से I R को माइनस करेंगे. You will get the value of internal resistance. So अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है I into कैपिटल R या EMF माइनस I into स्मॉल r. अगर आपने लॉस वोल्ट्स निकालने हैं I into स्मॉल r या EMF में से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर दें. और अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो EMF माइनस IR डिवाइड बाय I कर लेंगे. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. सेकेंडली, मैक्सिमम पावर आउटपुट अगर आपसे कहा जाए तो इट इज I स्क्वेयर R. जो बाहर पावर मिल रही है दैट इज व्हाट योर आउटपुट इज. और अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज वेस्टेड तो वो I स्क्वेयर इंटू स्मॉल r हो. एनर्जी वेस्टेड या पावर लॉस्ट निकालनी हो तो I स्क्वेयर को साथ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर लॉस्ट. और अगर आउटपुट की बात करेंगे तो I स्क्वेयर इंटू कैपिटल R करेंगे, दैट विल बी योर आउटपुट पावर. तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए बिकॉज यही वो कैलकुलेट करवाता है. सेकेंडली, if we plot a graph of power and resistance, you'll find out that maximum power output is achieved only when internal resistance is equal to external resistance. हमेशा ये आपने बस इसको हम वैसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं बट द प्रूफ इज नॉट इन योर सिलेबस. ऑलवेज रिमेंबर कि मैक्सिमम आउटपुट पावर तब मिलती है आपको जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस सेल. बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज ही लेके इसको सॉल्व करना है.
आउटपुट पावर कहेगा तो आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, पावर लॉस कहेगा तो आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। एंड हेयर आर डिफरेंट टर्म्स। करंट कैसे निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, लॉस वोल्ट्स कैसे निकलेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपने सिर्फ इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके जो भी चीज कैलकुलेट करनी है वो इस इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट की जाएगी। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो आपने क्वेश्चन भेजा है वो बेटा पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, बेसिकली आप नोट कीजिएगा, एक टर्मिनल तो आपने जीरो लिया हुआ है, अब दूसरे टर्मिनल को आप ए से लेके बी तक मूव करवा सकते हैं। अगर आप ए पे आएंगे तो वोल्टेज जीरो हो जाएगी, बिकॉज यहां पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। आई इंटू आर करते हैं तो वोल्टेज आती है। अगर आप सेंटर में आ जाएंगे तो आधी रेजिस्टेंस नीचे है, आधी रेजिस्टेंस ऊपर है, यहां पे हाफ वोल्टेज मिलेगी आपको। और अगर आप बी पे चले जाते हैं तो यू हैव मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज 10 volts। इट्स अ डिवाइस with which you can vary the voltage output at point C। आधी वो रेजिस्टर नीचे है, आधी ऊपर है, तो रिमेंबर दैट R1 is half, R डिवाइड बाई 2R इंटू 10, 5 वोल्ट मिल रही है आपको। सिंपल वही हमने यहां पे रेशियो मेथड अडॉप्ट किया हुआ है। एंड इफ यू आर एट पॉइंट A, R is zero, so your voltage is also zero. And if you are at point B, it is the total resistance, so total voltage will be 10 volts. In other words, आप इसके जरिए अपनी वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू 10 volts। तो ये कॉन्सेप्ट है, एट ए potential difference is 0, at point B potential is 10 volts। So this is how we explain that if we change the resistance, and resistance क्यों वेरी करती है, because resistance is directly proportional to length। लेंथ बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आपके पास वोल्टेज भी इंक्रीज करती जाएगी। सो इट इज ऑल्सो यूज एज अ पोटेंशियोमीटर, दैट इज यू वेरी द रेजिस्टेंस, यू वेरी द वोल्टेज। क्लियर। अगर आप दो रेजिस्टर्स को पैरेलल लगाते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो सर्किट आ रहा है उसमें करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, I1 एंड I2। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। They have same voltage, but they will have different current. If these same I1 will be different and I2 will be different. So both parallel resistors have the same voltage, but they will have different current. And if we add these currents, we will get the total current from the cell itself. I1 plus I2, V over R1 plus V over R2. If we take V common, we get 1 over R1 plus 1 over R2, and from here if we take I over V, it is the reciprocal of the resistance because R is equal to V over I। सो पैरेलल के अंदर आपने जो रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 करके अपना आंसर निकालेंगे, वो भी 1 ओवर R के बराबर होगा, फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो R की वैल्यू आएगी। तो ये फर्क है सीरीज और पैरेलल के अंदर। अब ये नोट कीजिएगा, आपने 12 वोल्ट दिया हुआ है एंड बोथ द रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। So first of all, how to find their combined resistance? 1 over R1 plus 1 over R2, 1 over 22 plus 1 over 47, both in किलो ओम्स है, वो बाद में हम किलो ओम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। LCM, take the reciprocal, this is your value for combined resistance। तो उसको आप रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे, LCM लेंगे, जो आंसर आएगा उसका दोबारा से रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस आएगी। अगर हमने I1 निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय 22 किलो ओम्स, 22,000,
I2 निकालना है तो 12 डिवाइड बाय 47,000 एंड व्हाट इज द टोटल करंट? दोनों करंट्स को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट। इस तरह हम रेजिस्टर्स इन पैरेलल को हम सॉल्व करते हैं। दैट इज वी ऐड देम इन रेसिप्रोकल्स एंड देन वी सॉल्व देम। जो आंसर आएगा उसका दोबारा से रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व डीसी सर्किट्स। Explain why the terminal potential difference of a cell is with term internal resistance may be less than the electromotive force of the cell. वो कहता है कि जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये 4.5 से कम होगा। Why? Because some of the voltage is lost in the internal resistance and the current in the circuit is same. ये हमारा फॉर्मूला है। E is equal to IR plus I into R. E minus IR is your terminal potential difference. This value will always be less than the EMF of cell because आप EMF में से कुछ ना कुछ लॉस वोल्ट्स माइनस कर रहे हैं। That same logic here, some of the volt is lost, so always some difference will be less than value of EMF of the cell. अब उन्होंने हमें करंट बता दिया है, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मालूम है, हमें EMF मालूम है। वी वांट टू फाइंड आउट R, तो हम यहां पे R को सब्जेक्ट बना लेंगे। दैट इज E minus IR plus I into small r. And from here we can find out the value of internal resistance। आप 4.5 में से माइनस करें terminal potential difference, divide by the current and you will get the value of internal resistance। अब वो कहता है व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। V निकालना है आपने। दोनों तरीके हैं, E माइनस आई आर या I इंटू कैपिटल R। And you will get the value of terminal potential difference। Okay, one more question, one more, इसका आगे देखते हैं। Power dissipated resistor external resistance I naught square into R, करंट सेम होगा 0.65 square into 6 and you get the answer। Efficiency is output over input। This is your output। Input is the power produced by the cell, I square VI, सॉरी, तो पहले VI से हम बैटरी की पावर निकालेंगे। वोल्टेज उसकी जो दी हुई थी उसको आप करंट से मल्टीप्लाई कर ले तो आपको पावर ऑफ द बैटरी मिल जाएगी। अब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं आप, तो फिर आपको एफिशिएंसी मिलती है। दैट इज 2.53 डिवाइड बाय 2.92 मल्टीप्लाई बाय 100% विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। A second resistor of resistance 20 ohm is connected in parallel। अब वो जो सर्किट दिया हुआ है उसमें हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दी है जो 6 ओम के पैरेलल हो जाएगी। Describe and explain qualitatively the change in the heating effect within the battery। बैटरी के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट है वो I स्क्वायर इंटू आर है। सो इट डिपेंड्स ऑन द करंट। अगर आप दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है जिससे करंट ज्यादा हो जाएगा, और जब करंट ज्यादा हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा। Whenever you attach two resistors in parallel, the resistance of the circuit decreases। अगर रेजिस्टेंस कम हो रही है तो उस केस में करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो उस केस में ऑटोमेटिकली I स्क्वेयर इंटू स्मॉल r भी इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज करंट इंक्रीजेस I स्क्वेयर इंक्रीजेस, so there will be more heat produced inside the cell। इसको आपने लॉजिकल डील करना है एंड लॉजिकल एक्सप्लेन करना है। हमेशा याद रखिएगा पैरेलल जब भी आप लगाएंगे तो सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो जाती है।
whenever you attach in parallel. It says we have three resistors in series. We have to find the total resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. Proof आ गया. Start हम यहाँ से ही करेंगे. Same current in all the three resistors. IR1 plus IR2 plus IR3. I taken common. R1 plus R2 plus R3. And V over I is R. So step by step इसको हम solve करेंगे and we'll get the answer for